tanggal 5 Januari 2023, persiapan untuk Jalsah Nasional yang berlangsung di Villa Patung Ikan. Kita lihat persiapan tim dapur. Ini Kang Somad. Persiapan untuk makan malam. Persiapan di dapur. Orang lain ngomong naya. Panitia tim konsumen, kegiatan di dapur. Gimana Bu? Udah persiapannya buat makan malam? Mantap. Mantap. Suasana tempat parkir masih lengang karena emang belum pada hadir. Acara masih besok tanggal 6, 7 sampai 8. Ini tempat pendaftaran buat kaum ibu atau elit. Tim-tim yang ikut mensukseskan Jalsah Salana. Mantap. Ruang panitia. Assalamualaikum. Masa Allah. Ketua Cabang Bogor ikut andil dalam pelaksanaan Jalsah Salana Nasional. Ada Pak Amirda juga ikut hadir. Tim konsumsi oleh Kang Somad. Tempat ruang makan untuk acara besok. Masih merapikan banner-banner. Kang Pendi, gimana persiapan? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk menghitung transportasi. Tim pendaftaran, Pak Mubda, siap? Salam. Ruang jalsah atau digah kaum laki-laki. Tim keamanan. Di Villa Patung Ikan yang berada di Cihideng atau Cijeruk, Bogor. Suasana tempat villa kegiatan Jalsah Salana Jabar 2. Jalan di depan villa. Pendiri Jemaat Ahmadiyah bersabda, tujuan utama Jalsah Salanah ini ialah agar setiap orang yang tulus ikhlas secara pribadi dapat memperoleh pengalaman kerohanian. Mereka dapat menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Dan karena mereka diberkahi oleh Allah Ta'ala, pemahaman mereka tentang Allah makin bertambah maju. Di antara manfaat-manfaat lainnya, bahwa pertemuan di dalam Jalsah Salanah ini akan menjadi ajang saling kenal mengenal antara sesama saudara rohani, sehingga makin memperkokoh ikatan persaudaraan di dalam jemaat. मुझे देख तालिब मुंतज़िर Persiapan मुझे Jalsah Salana देख Nasional शक्ल 32 titik मजाज penempatan में ke Indonesia.
जो खुलूस से दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में मुझे देख तालिबे मुंतज़िर मुझे देख शक्ल मजाज में जो खुलूस से दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में dengan persiapan anggota yang akan hadir hari ini. Satu mobil. Oke. तेरे दिल में मेरा ज़हूर है Pasukan sudah siap dengan perjalanan menuju tempat jasa. Alhamdulillah peserta sudah komplit. Mobil akan berjalan ke lokasi jasa yang ada di Cihideng. Bila patungkan bismillah di pelaksanaan kegiatan jasa. तेरी आँख में मेरा नूर है मुझे कौन कहता है दूर है Alhamdulillah tamu-tamu sudah pada hadir. आँख में मेरा नूर है मुझे कौन कहता है दूर है मुझे देखता जो नहीं है तू ये तेरी नजर का कसूर है मुझे देख तालिबे मुंतज़िर मुझे देख शक्ल मजाज में जो खुलूस से दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में मुझे देख तालिबे मुंतज़िर के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने नियाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने नियाज में मुझे देख रिफत को हमें मुझे देख पस्ती का हमें मुझे देख रिफत को हमें मुझे देख पस्ती का हमें मुझे देख मुझे देख शौकत शाह में न दिखाई दूं तो ये फिक्र कहीं फर्क हो निगाह में मुझे देख Alhamdulillah rombongan Ciherang sudah tiba di lokasi jasa. Pila patungkan pembalik. Alhamdulillah mantap Pandep. Alhamdulillah rombongan Ciherang sudah tiba dengan selamat. Gimana perjalanan tadi? Perjalanan tadi gimana? मुझे देख तालिबे Pandep lagi registrasi pendaftaran untuk peserta मुझे jasa Salada. दिल की तड़प में तू मुझे देख रूए निगार में मुझे ढूंढ दिल की तड़प में तू मुझे देख रूए निगार में कभी बुलबुलों की सदा में सुन कभी देख गुल के निखार में कभी बुलबुलों की सदा में सुन कभी देख गुल के निखार में मेरी एक शान खज़ां में है मेरी एक शान बहार में मुझे देख तालिबे मुंतज़िर
मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूस से दिल की रमक भी है, तेरे दाए नियाज में, मुझे देख तालिब मुंतज़िर, Bagaimana मेरा rombongan dari Ciherang नूर sudah hadir. शक्ल हिलाल में, मेरा हुस्न बद्र कमाल Peserta dari Ciherang sudah मेरा hadir. Bapak नूर Nurdin शक्ल beserta Mami हिलाल Ilyas. में, मेरा हुस्न बद्र कमाल में, कभी देख Senang bareng? तर्ज जमाल में, कभी देख शान जलाल में, कभी देख Lagi pada nunggu तर्ज sebelum acara dimulai. जमाल में, कभी Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari pembukaan ini pertama, kita menanti setelah salat Jumat, kita berkenalan dengan salah seorang peserta yang baru pertama kali, dan beliau alhamdulillah sudah masuk ke dalam jamaah Ahmadiyah, walaupun sudah lama mengetahui soal Ahmadiyah. Boleh tahu namanya siapa? Abdul Fatah. Abdul Fatah ya. Yang saya dengar nih, Abdul Fatah penggemar sepeda nih, goeser. Sepeda dari tahun 78. 78, luar biasa. Udah berapa tahun itu? Ya pokoknya sekian lah itulah. Nah, usia kalau boleh ini 77 dengan anak berapa tadi? Anak dari istri 2, Ya. anak pertama di istri pertama 1, cucu 1, buyut 1. Iya. Dari istri sekarang anak 4 meninggal 1, ada 3. Cucu ada 4. Oke. Ada cucu ada 5. Ya. Nah, jadi gini, perasaan atau opini Pak Fatah ketika pertama kali mengikuti jasa, boleh nggak diceritakan? Apa? Jasa apa nih? Di sini sekarang di kita ini, Pertemuan. ini namanya kan jasa. Ya, Oh ya, kami dulu tahunya waktu belum masuk ke sini ya. Ya, Saya masuk bergabung suka- dengan jemaat lah ya. Saya masuk sholat di masjid eta Al-Fadl. Al-Fadl. Ya. Nah, tidinya sholat asar, lohor, maghrib. Ya. Nah, kalau isya waktu saya ke dokter Tati Ya. sampai sekarang. Terus saya ketemu Muhammad ya. Muhammad, ya. Terus dia mau ke jemaah, ada jemaah di mana? Saya nanya kepada dia. Jemaah tuh banyak, cuma dia jemaah masjid mana ke Bonja itu lega. Anu di Lebak, anu di Tongo, lamun di Tongo tuh Ahmadiyah katanya. Anak besok sholat ini, aduh balik tadi ya, jadi teh, aduh timbuk. Maaf saya bilang begitu ya. Ya, Nggak oke, apa-apa. terus lanjut. Lanjut. Oh iya, oh gitu ya, udah aja begitu. Ayo ada orang itu aja udah saya omong. Oh, ini ya, mau menjajal dari rumah Ya. yang notabene di Bogor, Ya. mau menuju lokasi sini pakai sepeda. Pakai sepeda. Masya Allah. Oke, kita lihat besok Pak Fatah iya, dengan iya. sepedanya. Oke, kita lihat Pak Fatah ini dan kita tanyakan bagaimana perasaannya atau gimana ininya. Dan pesan. Kalau sepeda tuh biaya banyak dari uang dari kuburan, ya dari mana tuh kalau betulin dah. Oh, gitu. Saya begitu aja. Kesannya begini, saya berdewa nikmat, gak ada kesan apa, yang nikmati hidup aja. Oke, mantap. Ya, Pak Fatah. Terima kasih. Sampai ketemu besok dengan sepeda. Oke. Betul Pak Abla ya. Dengan Pak Fatah punya slogan Jablay. Apa itu artinya, Pak? Jalan bareng lebay, Mm-mm. ya. Jalan bareng pula lolondokan. Oh gitu. Jalan bareng nungguan lohor. Oh gitu. Siap. Bener tak? Jalan bareng pun baiknya jalan bareng ya. Kurang Ya. dia jalan. Kan bagi non lohor mana? Oke, sampai besok lagi dengan bincang-bincang Pak Fatah selanjutnya dengan aksinya naik sepeda ke acara jalsa besok siang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Jazakumullah. मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में,
जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में। मुझे देख तालिबे मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में। मुझे देख तालिब मुंतज़िर, तेरे दिल में मेरा ज़हूर है, तेरा सर ही खुद सरे तूर है। तेरे दिल में मेरा ज़हूर है, तेरा सर ही खुद सरे तूर है। तेरी आँख में मेरा नूर है, मुझे कौन कहता है दूर है। तेरी आँख में मेरा नूर है, मुझे कौन कहता है दूर है। मुझे देखता जो नहीं है तू, ये तेरी नजर का कसूर है। मुझे देख तालिबे मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में। मुझे देख तालिबे मुंतज़िर के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने नियाज में। के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने नियाज में। मुझे देख रिफ़त को हमें, मुझे देख पस्ती का हमें, मुझे देख रिफ़त को हमें, मुझे देख पस्ती का हमें, मुझे देख इज्ज़े फ़कीर में, मुझे देख शौकत शाह में। न दिखाई दूं तो ये फिक्र कर, कहीं फर्क हो ना निगाह में। मुझे देख तालिबे मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में। मुझे देख तालिबे मुंतज़िर, मुझे ढूंढ दिल की तड़प में तू, मुझे देख रूए निगार में। मुझे ढूंढ दिल की तड़प में तू, मुझे देख रूए निगार में। कभी बुलबुलों की सदा में सुन, कभी देख गुल के निखार में। कभी बुलबुलों की सदा में सुन, कभी देख गुल के निखार में। मेरी एक शान खज़ां में है, मेरी एक शान बहार में। मुझे देख तालिबे मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में,
जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे Tim konstruksi sudah merapikan tempat मुझे देख तालिब मुंतज़िर मेरा नूर शक्ल हिलाल में मेरा हुस्न बद्र कमाल में मेरा नूर शक्ल हिलाल में मेरा हुस्न बद्र कमाल में कभी देख तर्ज जमाल में कभी देख शान जलाल में कभी देख तर्ज जमाल में कभी देख शान जलाल में रग जां से हूँ मैं करीब तर तेरा दिल है किसके ख्याल में मुझे देख तालिब मुंतज़िर मुझे देख शक्ल मजाज में जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में मुझे देख तालिब मुंतज़िर मुझे देख तालिब मुंतज़िर मुझे देख शक्ल मजाज में जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज़ में मुझे देख तालिब मुंतज़िर मुझे देख शक्ल मजाज में जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज़ में मुझे देख तालिब मुंतज़िर तेरे दिल में मेरा ज़हूर है तेरा सर ही खुद सर तूर है तेरे दिल में मेरा ज़हूर है तेरा सर ही खुद सर तूर है तेरी आँख में मेरा नूर है मुझे कौन कहता है दूर है तेरी आँख में मेरा नूर है मुझे कौन कहता है दूर है मुझे देखता जो नहीं है तू ये तेरी नजर का कसूर है मुझे देख तालिब मुंतज़िर मुझे देख शक्ल मजाज में जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज़ में मुझे देख तालिब मुंतज़िर के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी untuk mempersiapkan sarapan pagi pada hari ketiga jalsa. Menu hari ini toge dan teman-temannya Tinta Susi membawa
pembekalan untuk kaum ibu. Oh, siap. Mau dibawa Kang Edi kemana ini? Kelasnya. Siap. Mantap. Ya. Di pagi hari tim konsumsi. Wah, Kang Amir ikut serta. मुझे देख शक्ल मजाज में Konsumsi sudah जो mempersiapkan makan pagi. खुलूस से दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में मुझे देख तालिब मुंतज़िर मुझे देख शक्ल मजाज में जो खुलूस से दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में मुझे देख तालिब मुंतज़िर तेरे दिल में मेरा ज़हूर है तेरा सर ही खुद सरे तूर है तेरे दिल में मेरा ज़हूर है तेरा सर ही खुद सरे तूर है तेरी आँख में मेरा नूर है मुझे कौन कहता है दूर है तेरी आँख में मेरा नूर है मुझे कौन कहता है दूर है मुझे देखता जो नहीं है तू ये तेरी नजर का कसूर है मुझे देख तालिब मुंतज़िर मुझे देख शक्ल मजाज में जो खुलूस से दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में मुझे देख तालिब मुंतज़िर के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने नियाज में के हजारों सजदे तड़प Akan pesan-pesan dari Kang Hadi, perwakilan dari cabang Ciherang untuk acara jalsah berarus dengan tenda ini gimana, Kang Hadi? Ya, sebenarnya ini pengalaman pertama saya juga mengikuti jalsah yang ada campingnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya di kemarin-kemarin itu kita mengikuti jalsah itu hanya sekedar kita memberikan materi, kemudian balik ke tempat istirahat yang biasanya itu istirahat itu kayak seperti kamar dan sebagainya. Tapi di sini kita di sudut pandangkan lain yaitu dengan bisa teman-teman lihat di belakang itu banyak sekali tenda. Jadi tenda ini buat istirahat para peserta jalsah sendiri. Jadi dengan begitu karena ini pas banget dengan waktu hari libur anak-anak, jadi ini juga sebagai apa ya bisa dibilang tempat libur anak-anak juga sekalian camping. Seperti itu. Jadi ada sudut pandang baru atau pengalaman baru lah. Dari sarana kepanitiaan yang diadakan di sini gimana? Kalau dari kepanitiaan sih, kalau dari persiapan sih lumayan bagus ya. Cukup cukup recommended juga tempatnya. Panitia juga peserta yang baru datang seperti keamanan langsung mengarahkan misalnya parkirnya di mana atau langsung masuk ke registrasi mana, jadinya peserta merasa terbantu seperti itu. Dari segi yang lain dari semacam apa menu makan apa gimana? Memuaskan apa tidak? Menu makan parah ini, pokoknya ini mungkin gimana ya? Seperti masakan rumah sendiri lah. Jadi tidak ada bedanya memang. Mantap banget pokoknya. Oh, mantap. Oke, kita setelah berbicara dengan Hadi dengan kepuasan peserta ke panitia, alhamdulillah sangat memuaskan. Oke, jazakallah Kang Hadi. Siap. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertanya kepada Kang Basir
Rudin Mahmud Ahmad, perwakilan dari Jamiah yang sedang PKL di cabang Cisalada. Oke, sekarang kita akan bertanya, gimana kesannya mengikuti Jalsah Jabar 2? Ya, Kang Basir. kesan saya, ya saya cukup terkesan ya karena ini jalsah pertama saya di Jabar 2, Pak. Ya, soalnya saya seperti biasanya mengikuti jalsah. Ulang Pak. Ya. Saya cukup terkesan di jalsah Jabar 2 kali ini karena Jabar 2 ini melaksanakan jalsahnya itu di tempat terbuka ya. Di tempat terbuka, dan kita juga bisa refreshing juga kan. Nah, jadi menurut saya ini merupakan jasa yang oke lah, yang bagus begitu ya. Karena tidak hanya siraman rohani yang akan kita dapatkan di dalam jalsa ini, dan juga siraman jasmani juga ada kan, seperti kita bisa melihat pemandangan gunung Salak gitu yang begitu indahnya. Itu kesan saya menarik. Terus yang dirasakan mengikuti Jalsah Jabar 2 ini setara tidak panitia yang tersedia, gimana Kang Basir? Dari kepanitiaan menurut saya cukup baik ya, cukup baik karena mereka sudah berusaha keras untuk mentata acara ini supaya baik begitu, supaya nyaman terhadap peserta begitu, terhadap tamu-tamu yang akan datang ke sini. Seperti menyiapkan tenda begitu, seperti yang menyiapkan tenda, mereka menyiapkannya dengan rapi dan juga mungkin nyaman ya. Pengalaman PKL di Cisalada kemarin Kang Basir gimana? Ya, pengalaman PKL saya di Cisalada itu ya cukup menarik lah Pak ya. Maksudnya itu karena di sana itu kan jemaatnya berkumpul begitu. Jadi anggota jemaat di sana itu tidak pernah sepi Pak, apalagi ke masjid ya. Di masjid itu pasti ramai. Ini menjadi kesan buat saya juga ya. Terkesan saya terhadap apalagi Ansor gitu, Hudam kan. Karena mereka jemaatnya ngumpul, nah jadi selalu banyak gitu. Kemudian di Cisalada juga orang-orangnya tuh ramah-ramah Pak, ramah-ramah. Setiap saya keliling pagi begitu, pasti ada yang nyapa, Pak mau kemana begitu kan. Cukup menarik lah saya PKL di Cisalada. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat saya nanti setelah saya lulus dari Jamiah Pak. Nah, kalau misalnya saya ditugaskan di tempat seperti ini, wah saya berarti harus lakukan seperti ini. Nah, ini merupakan pelajaran buat saya lah PKL di Cisalada ini. Kang Basir, kita kan akan membagikan pengalaman Kang Basir ya buat para jamiah yang akan PKL selanjutnya. Ya. Trip apa yang akan disampaikan untuk para mereka yang akan ber-PKL di luar masing-masing cabang? Ya, dari saya ya, setiap kita ditugaskan di mana saja, cobalah kita menikmatinya begitu. Jangan terlalu tegang gitu, nikmati aja gitu. Jangan diri kita tuh jangan merasa terbebani begitu. Kita jalani aja, misalnya kita tiba-tiba mau ceramah gitu kan, misalnya begitu biasanya secara tiba-tiba. Nah, kita jalani aja, kita ceramah lah, misalnya disuruh ngejelasin tentang sholat atau apa, kita terima. Maksudnya santai lah gitu. Jangan terlalu tegang, santai aja. Dan juga ketika kita ditugaskan misalnya lagi PKL nih di suatu cabang, usahakan kita jangan menjadi pendiam gitu. Jangan menjadi pendiam. Kita ngobrol sama siapa aja, misalnya sama anggota yang terdekat gitu. Sama anggota yang terdekat, terus kita jalan-jalan lah ke rumah-rumahnya, kita kunjungan begitu. Seperti itu. Insya Allah para anggota itu bakal suka. Berarti jangan tinggal di tempat ya. Iya, maksud saya tuh jangan sering di rumah begitu. Kita
sesekali jalan kemana gitu kan, mengunjungi anggota ya, seperti itu Pak. Kang Basit, kita akan tanya satu lagi ya buat Kang Basit, buat pengalaman atau harapan di Jabar 2. Apa yang diharapkan dari para jamiah PKL di sini? Harapan saya untuk jemaat wilayah Jabar 2 ya Pak. Jadi harapan saya harap tuh kaid wilayah, kaid wilayah atau kaid Udam yang sedang menjabat di cabangnya masing-masing, saya harapkan mereka tuh bisa merangkul hudam-hudamnya supaya aktif melaksanakan acara. Jadi tidak hanya ketika ada acara saja aktifnya, melainkan ketika sholat ke masjid itu saya harapkan seperti itu untuk para kaid ya, kaid hudam. Saya harapkan seperti itu, rangkul ke masjid, datang ke masjid sholat berjamaah gitu bareng-bareng. Ya minimal kita melaksanakan sholat berjamaah itu 3 kali. Misalnya sholat maghrib, sholat isya gitu kan, ada waktu luang lah kita ke masjid gitu. Nah, saya harap kaidnya, kaid masing-masing cabang tuh kaid hudam bisa merangkul teman-temannya, bisa merangkul anggota-anggotanya supaya datang ke masjid sholat berjamaah gitu Pak. Itu aja sih harapan saya untuk jemaat wilayah Jabar 2 Pak. Selebihnya ya cukup bagus ya, bukan cukup bagus, emang luar biasa bagus begitu. Oke, kita akhiri pembicaraan dengan mahasiswa jamiah yang sedang ber-PKL di Jabar 2. Semoga bermanfaat buat para anggota yang ada di Jabar 2 dan khususnya para hudam, biar pada aktif semua kegiatan dan memajukan Jabar 2 semaksimal mungkin. Terima kasih Kang Basit, Kang Basit nuhun ya. Oke, jazakumullah. Makan pagi di tempat terbuka di kolam. मुझे देख शक्ल मजाज में जो खुलूस Apa kabar bosku? Selamat pagi bosku. रमक भी है Selamat pekan. नियाज में मुझे देख तालिब मुंतज़िर मुझे देख शक्ल मजाज में जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए में मुझे देख तालिब मुंतज़िर मुझे देख शक्ल मजाज में जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में मुझे देख तालिब मुंतज़िर मुझे देख शक्ल मजाज में जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में मुझे देख तालिब मुंतज़िर sebagai kekayaan yang tidak bisa kita pungkiri sebagai sebuah bangsa. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir, atau bahkan mungkin dari sejak kita merdeka, keberagaman sosial kita ini menjadi media yang terus mengkampanyekan pernyataan.
dan menjadi pasukan-pasukan perdamaian di dalam media sosial. Siap teman-teman? Allahumma biqilal qabatori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dan sekali mencapai 24 ribu. मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए-ए-नियाज़ में, मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए-ए-नियाज़ में, मुझे देख तालिब मुंतज़िर। तेरे दिल में मेरा ज़हूर है, तेरा सर ही खुद सर तूर है, तेरे दिल में मेरा ज़हूर है, तेरा सर ही खुद सर तूर है, तेरी आँख में मेरा नूर है, मुझे कौन कहता है दूर है, तेरी